गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एसए 320। एसए 320 क्या है? मेटरलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। एसए 320 क्या है? मेटरलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो फर्स्ट देखिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेटरलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटरलिटी क्या है? मेटरलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिस्कशन प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग मेटरलिटी। मेटरलिटी क्या है? मेटरलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट and discussion presented in financial reporting framework, provides a reference to the auditor in determining materiality. If financial reporting framework does not include a discussion, following can be referred. First क्या है? misstatement including omission expected to influence the economic decision of users. Misstatement including omission expected to influence the economic decision of user. Second क्या? size or nature of misstatement and the surrounding circumstances. Size or nature of misstatement and the surrounding circumstances. फिर क्या? common financial information needs of the user as a group. फिर judgment of materiality provides a basis for determination of entity of risk assessment procedure, identifying and assessing risk of material misstatement, nature, timing, extent of further audit procedure. फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है परफॉर्मेंस मेटरलिटी। परफॉर्मेंस मेटरलिटी क्या होगा? द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस दैन मेटरलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मेटरलिटी लेवल से लेस एक अमाउंट सेट किया जाता है बाय द ऑडिटर, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस मेटरलिटी। फॉर व्हाट? To reduce to an appropriate low level, to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of the uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for financial statement as a whole. फिर आगे हम देखेंगे ऑडिटर्स ड्यूटीज़। ऑडिटर्स ड्यूटीज़ क्या है? अपॉन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर्स विल डिटरमाइन द मेटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्या डिटरमाइन करेगा? मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। डिटरमाइन द मेटेरियलिटी लेवल फॉर ए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन फॉर विच misstatement of lower amount be expected to influence the economic decision of users. Then है determine performance materiality for purpose of assessing the risk of material misstatement and determining the NTE of further audit procedure. ये है duties of auditor। आगे रिवीजन ऑफ मेटरलिटी। रिवीजन ऑफ मेटरलिटी में क्या है? इन इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड ऑडिटर टू हैव डिटरमाइन अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली, auditors will revise metality for financial statement as a whole and if required for particular classes of transaction, account balances or disclosure. क्या है? in event of becoming aware of information that would have caused auditor to have determined a different amount initially, auditors will revise materiality for financial statement as a whole and if required for particular classes of transaction, account balances or disclosure. If the auditor conclude that a lower materiality than that initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality and whether the entity of further audit procedure remain appropriate. फिर है use of benchmark in determining materiality. A percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for financial statement as a whole. A percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole. कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को। वो फैक्टर्स क्या है वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स है वो अफेक्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को। फिर दूसरा आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूज़र ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस्ड। फिर है द नेचर ऑफ द एंटिटी वेयर द एंटिटी इज एट इन its life cycle and the industry and economic environment in which the entity operates. The entity ownership structure and the way it is financed and the relative volatility of the benchmark. ये कुछ फैक्टर्स हैं
दैट अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो ऐसे 320 होता है हमारा कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।